सुप्रभात। आज जवाहर नवोदय विद्यालय मलम्पुझा पालक्काड में वर्चुअल स्तर पर पैनल निरीक्षण चल रहे हैं और इसके लिए माननीय सहायक आयुक्त श्री द्राविडमणि जी, नवोदय विद्यालय समिति हैदराबाद संभाग और उनके साथ और वरिष्ठ प्राचार्य गण भी हमारे सामने उपस्थित हैं और इस पालन निरीक्षण के लिए यहाँ पधारे श्री द्राविडमणि जी, श्रीमती सी.वी. शांति, प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय त्रिशूर, श्रीमती के. श्रीलेखा, प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय मलप्पुरम, श्री श्रीजित बाबू, प्राचार्य जाह्नवी वयनाड, श्रीमती टी.जे. रोस्मोल, उपप्राचार्य जाह्नवी पत्तनंतिट्टा, आतिथेय विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती सी.वी. प्रमीला, उपप्राचार्य सुश्री क्रिस्टीना सेवियर, प्रिय सहकर्मियों, प्यारे अभिभावकों, हितैषियों, प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को मेरा हार्दिक स्वागत है। कोविड महामारी की इस काल में वर्चुअल स्तर पर पैनल निरीक्षण करना पड़ता है और ये नवोदय विद्यालय की सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है कि विद्यालय की गतिविधियों का निरीक्षण करते हुए उसको और प्रभावशाली एवं सफल बनाने के सारे प्रयत्न और निर्देश हमारे अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में किए जाते हैं। और सबसे पहले हमारे प्रातःकालीन सभा है जो वर्चुअल स्तर पर है और इसके लिए मैं सभी पैनल सदस्यों को इसके लिए स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। प्रेयर। हम स्वराज की ऊर्जा भारत की
ledger, പ്രതിജ്ഞ. ഇന്ത്യ എൻ്റെ രാജ്യമാണ്. എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു. സമ്പൂർണവും വൈവിധ്യപൂർണവുമായ അതിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും മുതിർന്നവരെയും ബഹുമാനിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെയും എൻ്റെ നാട്ടുകാരുടെയും ക്ഷേമത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കും. അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിലും ഐശ്വര്യത്തിലും മാത്രമാണ് എൻ്റെ ആനന്ദം കുടികൊള്ളുന്നത്. ജയ് ഹിന്ദ്. thought for the day. Respected panel members, in celebration with Azadi Ka Amrit Mahotsav, I am here to present one of the quotes of Mahatma Gandhi as thought for the day. Happiness is when what you think, what you say and what you do are in harmony. I repeat, happiness is when what you think, what you say and what you do are in harmony. Thank you and have a nice day. Vidyalaya News. Good morning. Today's news headlines. WHO tightens global air quality norm. Payment of $50,000 for each COVID death. PM Modi arrives in Washington to meet CEOs of 5 companies. Syro Malabar Church comes out in support of the bishop. Operation Wide Body Aircraft to be launched at Calicut Airport soon. Sports news. Winter Olympics. Athletes must be fully vaccinated. Taliban bans IPL broadcast in Afghanistan for showing women dance. News in detail. WHO tightens global air quality norms. The World Health Organization, in its first ever update since 2005, has tightened global air pollution standards in recognition of the emerging signs in the last decade that the impact of air pollution on health is much more severe than expected. National news. Raise 50,000 for each COVID death. The Ministry of Home Affairs on Wednesday informed the Supreme Court that the National Disaster Management Authority has recommended the payment of $50,000 each as an expiratory assistance to the next kin of those who died of COVID-19. PM Modi arrives in Washington to meet CEOs of 5 companies. Prime Minister Narendra Modi's motorcade arrived at the Villa Intercontinental, a short distance from the White House, just before 7:30 p.m. on Wednesday, in a wet and windy fall evening in Washington. State news. Syro Malabar Church comes out in support of the bishop. The Syro Malabar Church on Wednesday threw its weight behind the Para Bishop, Joseph Kallarangattar, alleging a concerted move to isolate and attack him for the warning issued by him to the laity during worship. Operation of wide-body aircraft at Calicut Airport soon. Efforts are on to resume the operation of wide-body aircraft at Calicut Airport with a 9-member committee chaired by Civil Aviation Secretary Pradeep Singh Karola positively indicating about its reception in 2 months. Moving to the world of sports. Winter Olympics. Athletes must be fully vaccinated for COVID-19. US athletes trying to make the Winter Olympics will have to be fully vaccinated for COVID-19 under the groundbreaking new policy announced by US Olympic and Paralympic Committee. Taliban bans IPL broadcast in Afghanistan for showing women dance. The Taliban ruled Afghanistan has banned the broadcast of hugely popular Indian Premier League IPL in the country over the presence of female audience. That's all for today's news. Thank you. School Vision. Respected panel members, principal, teachers and all my dear friends. Today I am standing here to speak a few words about the topic, the freedom struggle and our freedom fighters. The Indian freedom movement is one of the most significant progress in the Indian history. Today we all have the freedom to do walk, speak and do whatever we want. However, the situations were not the same when India was ruled by the Britishers. 70 years back, the situations were so different, as the people did not have any freedom to do anything according to their wish. Those were the days of hardship, struggle and sufferings. It is our freedom fighters who gifted us with freedom today. Every big and even small efforts made by them have resulted in the life we are living today.
They have the courage, the love for their motherland to fight against the British to bring back freedom. We cannot imagine what freedom is if our freedom fighters did not have done their part back then. Freedom fighters were the people who selflessly sacrificed their lives for the freedom of our country. Few chose the path of violence, while others chose the path of non-violence to bring an end to the British rule in India. Every freedom fighters have contributed in their way, in their area, to end dominance and slavery. They were the symbols of patriotism and bravery. They were the people who did not care about their family but thought about the country and fought for the more significant cause. They were the ones who ignited the people, motivated the citizens of India to fight back to all the oppressions. They made the common people aware of their rights and privileges. They raised their voice against violence and injustice. For this, they have struggled a lot and faced a lot of pain, hardship, and the sacrifice which cannot be compared with anything else. Non-cooperation movement by Gandhiji, Indian National Army by Subhash Chandra Bose, who had said that, "Give me blood, I will give you freedom," and inspiration to the youths by Chandrasekhar Azad, and even also many more have created a wave to unite the whole nation against the Britishers. Tantia Tope, Bhagat Singh, Sardar Vallabhbhai Patel, Lal Bahadur Shastri, Maulana Abdul Kalam Azad, and many more will always be remembered for their contribution to their motherland. It is our responsibility to pay tribute to our freedom fighters. We all must remember them and their sacrifice for the freedom of our country. As an Indian, we all are very proud of them, and we must do everything possible which will make our country great. Be an asset to our country. Thank you. Jai Hind. Story. नमस्कार। कुंतलपुर का राजा बड़ा ही न्यायप्रिय था। वह अपनी प्रजा के लिए दुख दर्द में बराबर काम आता था। प्रजा भी उसका बहुत आदर करती थी। एक दिन राजा गुप्त वेश में अपने राज्य में घूमने निकला। तब रास्ते में देखता है कि एक वृद्ध एक छोटा सा पौधा रोप रहा है। राजा कौतूहलवश उसके पास गया और बोला, "यह आप किस चीज के पौधे लगा रहे हैं?" वृद्ध ने धीरे से देखा और धीमे स्वर में कहा, "आम का।" राजा ने हिसाब लगाया कि उसके बड़े होने और उस पर फल आने में कितना समय लगेगा। हिसाब लगाकर उसने आश्चर्य से वृद्ध की ओर देखा और कहा, "सुनो दादा, इस पौधे को बड़े होने और उस पर फल आने में कई साल लग जाएंगे। तब तक तुम क्या जीवित रहोगे?" वृद्ध ने राजा की ओर देखा। राजा की आंखों में मायूसी थी। उसे लग रहा था कि वृद्ध ऐसे काम कर रहा है जिसका फल उसे नहीं मिलेगा। यह देखकर वृद्ध ने कहा, "आप सोच रहे होंगे कि मैं पागलपन की काम कर रहा हूँ। जिस चीज के आदमी को फायदा नहीं पहुँचता उस पर मेहनत करना बेकार है। लेकिन ये भी तो सोचिए कि इस बूढ़े ने दूसरों की मेहनत का कितना फायदा उठाया है। दूसरों के लगाए पेड़ों के कितने फल अपनी जिंदगी में खाए हैं। क्या उस खर्च कर उतारने के लिए मुझे कुछ नहीं करना चाहिए? क्या मुझे इस भावना से पेड़ नहीं लगाने चाहिए कि उनके फल दूसरे लोग खा सके? जो केवल अपने लाभ के लिए ही काम करता है वो तो स्वार्थी मनुष्य होती है।" वृद्ध की ये दलील सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। आज उसे भी कुछ बड़ा सीखने का मिला था। धन्यवाद। School Southern National Anthem. जय हे
National salute. Order. Assembly march off.